Hi, welcome back to my channel and another video after Aloo ka Paratha. This is cooking with Mickey. So setup देख के थोड़ा सा तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बना रहा हूँ. So yes, I'm gonna frost a cake in front of you all because मेरे को करना है. So I know it doesn't look that professional. और जॉर्ज मेरे पास कहा, oh Aman, what the heck you have done? It doesn't look that professional. अगर इतना प्रोफेशनलिज्म चाहिए था तो कर लेती छुट्टी, आ जाती मेरे साथ ऊपर सफाई करवा देती. 1 महीने से काम नहीं करा, इतना गंद पड़ा हुआ पर. आधा घंटा हो गया मेरे को नीचे सेटअप लगाते हुए और फिर भी इतना गंदा घटिया सा सेटअप लगा हुआ है. तो अभी मैं क्या करूँ, अभी यहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार भी मैंने करा था और पिछली बार मेरा वीडियो ही नहीं ऑन हुई थी. So कंप्लेंट्स को खत्म करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो. So this is our whipping cream. You can see this is our whipping cream. So आज हम बनाएंगे Oreo cake. I love Oreo cakes. तो अगर किसी को मेरे को गिफ्ट करना हो ओरियो केक्स, ओरियो कुकीज के साथ जो देना दे दो मेरे को, मैं खा लूंगा सब कुछ. और मैं भी इसको इस क्रीम में क्रश करके डालूंगा बिकॉज थोड़ा सा ओरियो का फ्लेवर आता है और मेरे को वो ग्राइंड करके नहीं डालना पसंद इसमें. सी केक सॉफ्ट होता है, उसमें क्रीमी टेक्सचर भी रहता है, बट द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इन अ केक इज अ क्रंच. सो इसलिए मैं ये हाथ के साथ तोड़ के डालता हूँ. क्रैक 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 क्रैक. You get deja vu when she's with you. Don't you dare to rate my singing skills. I know it's extraordinary. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Yes, मैंने cooking भी करता हूँ, मैं cleaning भी करता हूँ. Now you can call me. Hey mama, mama. Hey mama, mama. See? ये थोड़ा सा वाइट लग रहा है. इसमें मैंने वो भी बहुत सारा डाला, क्रम भी बहुत सारा डाला, इसलिए अभी मैं इसमें थोड़ा सा गनाश डालूंगा. This is ganache. Sponge. See how beautiful it is. Ding dong. अब इसको करेंगे, इसका चीर फाड़, इसका ऑपरेशन करेंगे because she is pregnant. तो मेरे को 2 pounds वाले का बोर्ड नहीं मिला, this one, तो मैं ये वाला उठा के ले आया because ये मिल रहा था मेरे को ऊपर से. After stacking one layer of the cake on the cake board, you have to give it a wash. This is basically a sugar syrup you can say, but मैंने इसमें क्या करा है, मैंने इसमें शुगर भी ऐड करा और कॉफी भी ऐड करा और थोड़ा सा जो गनाश था वो ऐड करा कि हमारी जो स्पॉन्ज है वो स्वीट से ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाए. सो मैंने इसमें कॉफी भी ऐड करा और जब मैं स्पॉन्ज लगा रहा था मैंने स्पॉन्ज में भी कॉफी ऐड करा था बिकॉज आई लाइक कॉफी. आई एम ऑब्सेस्ड विद इट. I think that's enough. I am not a professional baker. मतलब अभी 1 महीना गया था बेकिंग की क्लासेस लेने ताज कृष्णा, बट कोविड की वजह से मेरे को घर पे आना पड़ा फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 15 डेज की लीव है हमारी और उसके बाद हमें फिर से ज्वाइन करना है. तो अभी जस्ट सीख ही रहा था, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बेकर. मैंने बेकिंग एंड स्टफ स्टार्ट करा था लास्ट ईयर इन मार्च आई गेस. और जो भी मैंने सीखा वो सारा टीवी से सीखा है और यूट्यूब से सीखा है. और टीवी पे एक चैनल आता है, इफ यू वांट टू बी अ बेकर यू हैव टू वॉच दैट चैनल बिकॉज नॉट चैनल यू हैव टू वॉच दैट शो बिकॉज दैट शो इज फिनोमिनल. आता है TLC पे केक बॉस कार्लोस बेकरी का. इफ आई एम डूइंग दिस आई एम इंस्पायर्ड बाय देम. कार्लोस बेकरी बड़ी, oh my god, they bake amazing cakes. So you have to go and watch that show. इट्स नॉट पर्टिकुलर बिकॉज मेरे को अच्छा लगता था तो मैं देखता था. इट्स लाइक कि जब आप वो चीज़ देखते हो तो यू कैन सी द एक्चुअल वर्क प्लेस
कि वो कैसे एक पूरी फैमिली लाइक बेकिंग में जुड़ी हुई है, बेकिंग करता है। लाइक उसके फादर बेकिंग करते थे बड़ी के, एंड नाउ अभी वो बेक करता है। और मैंने अभी उसमें एक क्रीम लगाया, क्रीम के ऊपर गनाश लगाया, गनाश के ऊपर हम चॉकलेट सॉरी अब हम ये डालेंगे ओरियोज फॉर एक्स्ट्रा क्रंच। Now the next layer, again I'm going to repeat the same step again. You know, जब मैं 12 लाइक जब हम 12th ग्रेड को क्रॉस कर जाते हैं, लाइक एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, नाउ वी हैव टू ऑप्ट अ करियर फॉर अस। तो मेरे माइंड में 2 करियर थे, फर्स्ट था होटल मैनेजमेंट और सेकंड था फैशन डिजाइनिंग। लेकिन फैशन डिजाइनिंग को मैंने इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया बिकॉज मेरे को कुकिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट एंड क्रिएटिव थिंग्स लाइक क्रिएटिव स्टफ एंड कुकिंग, दे बोथ आर लाइक माई लाइक स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। और अगर मैं अपना फ्यूचर देखना चाहता तो मेरे को इन 2 में ही अपना फ्यूचर दिखता था। सो आई ऑप्ट कुकिंग बिकॉज कुकिंग में बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं। किचन इज नॉट जस्ट about like a closed chamber, it is very vast. We have continental kitchen, we have Indian kitchen and bakery, then butchery section. Butchery section is basically where the cutting of meat and stuff has been done. So ये किचन का रहता मैक्सिमम। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट एंड क्रिएटिव स्टफ में। आई ऑप्ट बेकरी फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, आई ऑप्ट बेकरी एंड नाउ आई एम हियर। Now it's the time to frost the cake. Oh. So I will show you the most easiest way to frost a cake. Glass में बंद करके, you can do it like this also, ऐसे करके. But if you are not pro, तो आप एक ग्लास ले, इसको ऐसे करें, उसके बाद आप इसमें क्रीम ठोकें like this. तब आपको इसकी पोनी टेल बनानी है और ये खुद बखुद आगे आ जाएगा। और अभी आपने सिंपल इसको सिर्फ राउंड घुमाना है। इस ब्रश के साथ, which is also known as brush game, उसके बाद हम इस पे गनाश डालेंगे और ये ऑलमोस्ट रेडी। लेट्स pour it. Start nozzle. तो अभी मैं इसमें फ्लावर्स बनाऊंगा और उसमें ओरियो अटका दूंगा सब कुछ, और फिर हम इसको रात को खाएंगे, सब खाएंगे रात को इसको। Now I am exhausted. Almost, and you can see it is looking so delicious. अब मेरे को इस पे थोड़ा सा चॉको चिप्स लगाना है बॉर्डर पे, and that is it. Finally, our cake is ready. And if you like my video, do like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for God's sake. And comment down below what you guys want to see next.